Hello children, how are you all of you? Fine. In last lecture in economics, I explained you the relationship between the wealth and welfare. Now in this lecture, two more concepts related to economics we will try to understand. First one is your factor of production and second one is the trade cycle. So let's talk about the factor of production. Okay. See children, to satisfy the human want, it is essential to produce the goods and services. Okay, so to produce the goods and services, whatever factors are essential, whatever components are essential, that all components are known as the factor of production. And whatever components are there, that all components we have divided into four categories as per the convenient. So first one, that is the land, second that is the labor, third that is the capital, and fourth entrepreneurship or entrepreneurship. Okay, so let's talk about one by one about this. First, the factor of production is the land. When I say the land, it doesn't mean that a part of soil or a jameen ka tukda. It is not so. In economics, the concept of land is very vast. When I say land, it includes land itself, but with it, the part of ocean, part of sea, whatever above the earth, means the air, sunlight, and whatever the beneath of the earth, means the different kinds of minerals, that all are included in the land. Next, land is not man-made factor. It is a natural factor. It's a free gift of nature to human being. Okay. And most important factor of production, but interesting thing is that it is passive factor, it is not active factor. Till human being not put its effort on it, till that land does not show its creativity, and that's why it is a passive factor. Whatever the return we get against the land utilization, that is called the rent. Another important thing is that at once land has only one use. Suppose you are using the land for agriculture, then you can't use that for any other purpose. Suppose in one field you grow the rice, at the same time you are not able to grow the wheat. Most important, another features of land is that land is not mobile. Means suppose someone is living in Shivrajpur or any other places, say the Jarod, and he think that a big land area he has and that he want to brought in Halol and set up here. It is not possible for that. Does it clear? So it is not possible for, but the ownership of land can be transferred. That one we have to keep in our mind when we talk about the land. Okay. And its remuneration, already I told you, that is the rent. Okay, its remuneration is the rent. Second most important factor, that is the labor. Labor is another most important factor of production. No doubt it is created by nature. And another important thing is that you can't separate labor and laborer to each other. आप मजदूर से मजदूरी को अलग नहीं कर सकते हो. If there is labor, then there is laborer. And when we talk about the labor in economic term, then both type of labors are included, as well as mental labor and as well as physical labor. Mental labor means like lawyer, doctor, teachers. All these are the mental labor. Okay, and those who do the physical work like farmers, okay, worker in the factory, that all are into the physical labor. Most important thing,
Labor is the heterogeneous factor, means each and every labor has its own unique identity, unique efficiency, unique efforts. Next important thing, it is a no doubt it is a heterogeneous, but at the same time labor is the subject of perishability. Okay, पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो थक जाता है, उसको रिक्रिएट होने के लिए एनर्जी ऑब्टेन करने की जरूरत पड़ती है. सो इट इज अ हेटेरोजेनियस फैक्टर एंड एज वेल एज पेरिशेबल फैक्टर. व्हाटएवर द रिटर्न ऑफ लेबर इज दैट इज द वेज. इन अकाउंट person who do the mental work, he gets salary or any other kinds of remuneration. Okay, and those who do the physical work, he get wage. But in economics, no, there is no bifurcation. Okay, it doesn't matter whether it is a physical labor or mental labor. Its return is the wage. Okay, third, capital. It is a man-made factor. First thing is that इंसान की खुरापात दिमाग का नतीजा, मैं बोलता हूँ बहुत बार कि इंसान की खुरापात दिमाग का नतीजा जो है दैट इज द कैपिटल. ओके, these two are the natural factor. Okay, but capital is purely man-made factor. इंसान ने खड़ा किया है इसे, इंसान ने डेवलप किया है इस कंसेप्ट को. And what is exact capital? A capital is the part of that wealth which is used for the process of further production. Further production के लिए whatever money is invested by this last factor, entrepreneur, that money is called the capital. And very nice characteristics is that it is always has the liquidity property. Means it is not कोई एक जगह पे accumulate होके नहीं रहता है. जिस तरह से पानी को आप जमीन में डाल दो तो वो फैल जाता है. Similarly, when you are investing that capital, it shows its power accordingly. That is the power of capital, and its return is the interest. Okay, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जिस तरह से आप जब बाजार में जाके कोई चीज खरीदते हो तो आप उसका मूल्य चुकाते हो, बराबर है. तो आप जो कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हो उसका जो आप मूल्य चुकाते हो, उसकी जो आप कीमत पे करते हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. सो इट्स रिटर्न इज द इंटरेस्ट. नेक्स्ट, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दिस फैक्टर अगर ये नहीं हो तो इनका कोई भी मतलब रहता नहीं है, उनके एग्जिस्टेंस के कोई मायने नहीं है. बिकॉज ही इज द रियल रिस्क बेरर हु अमांग ऑल दीज थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो इन तीनों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा लाने का हिम्मत दिखाता है. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप. साहस करना, और जो साहस करता है वो दूसरों से ज्यादा अर्न करता है. दैट इज द रीजन हिज रिटर्न इज द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ह्यूज देन whatever these factor get. आप किसी के यहाँ पे घर भाड़े पे ले लो, किराए पे ले लो, उसका हर महीने फिक्स किराया होता है. अब आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, मकान मालिक ऐसा नहीं बोलेगा यार तुम्हारी तो इनकम यार बहुत बढ़ गई है, या मेरा किराया भी अभी बढ़ा दो. नो, हिज रिटर्न इज फिक्स, लेबर रिटर्न इज फिक्स, कैपिटल रिटर्न इज फिक्स. बट एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ही इज टेकिंग द रिस्क का रिवॉर्ड जो है दैट इज द प्रॉफिट. And the enterprise is getting an enormous profit he is getting. No doubt profit may be negative form में भी profit हो सकता है. that is the loss. Is it clear? So entrepreneurship बहुत important factor है. Now interesting thing is that if you eliminate anyone from this, इन चारों में से किसी एक को आप साइड में कर दो, on the spot factor of production will be collapsed, नीचे बैठ जाएगा. आप जमीन हटा दो, लेबर कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्किल्ड हो, कितना भी आपके पास कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर करने वाला कितना भी हो, इफ लैंड इज नॉट देयर इट इज यूजलेस. कोई मतलब नहीं रहता है उसका. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लेबर. आप इसमें से जो है लैंड रखो, कैपिटल रखो, एंटरप्रेन्योर रखो, लेबर ही नहीं है, काम करने वाला ही कोई नहीं है. जमीन फर्स्ट क्लास है, फैंटास्टिक,
but there is nobody to do the work, then production is not possible. It means you need all the 4 factors, then only production is possible. That is one thing. Here we completed the factor of production, its remuneration and everything. Now last part of this topic, that is the trade cycle. So what is the meaning of cycle? Cycle means the जो जिंदगी में जो उतार और जो चढ़ाव और फिर जो उतार है, बराबर है. Same thing is happened in business also. I said so many times, nothing is perpetual in this universe. कुछ भी शाश्वत नहीं है, हर चीज बदलती है. Okay, even it is said in the Puranas, ब्रह्मा को भी वो भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी मरना पड़ता है, मेरा भी एक लाइफ स्पान है. जब ब्रह्मा को, जो सृष्टि को चलाने वाला है, उसको मरना पड़ता है, अगर वो परपेचुअल नहीं है, बराबर है. इफ ही इज नॉट अजर एंड अमर, then whatever situations which is created by human beings, how it can be the sustainable, वो टिकाऊ नहीं हो सकती है. There are change, and whatever change are taken place in the business, that is called the trade cycle. So here I have written change in pattern of economy or change in pattern in economy is the trade cycle. So trade cycle, what kind of changes are there? Certain changes are irregular change. Okay, always it is happening up and down, कुछ ना कुछ होता रहता है. Certain changes are seasonal, season के हिसाब से बदलते रहते हैं. Certain changes are long run, लंबे टाइम में उसकी असर देखने को मिलती है. शॉर्ट टर्म में मालूम नहीं पड़ता क्या हो रहा है. And last, long term dynamic change, that is the cyclic change. Okay, some definitions are there that I will read for you first of all, and then I will start the phases of trade cycle. Okay, so see here, definition of trade cycle. It is saying, according to Halol, most important uska definition is saying trade cycle is an interval that embraces alternating period of prosperity and depression. यानी कि जो अच्छे समय और बुरे समय के बीच में नॉन स्टॉप बदलाव लेकर आती है. पहले बुरा होगा, फिर अच्छा होगा, फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा, और ये चक्र नॉन स्टॉप चलता रहेगा. दैट इज कॉल्ड द ट्रेड साइकिल. हॉर्डी बोलते हैं ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी. And what are its characteristics? First, depict dynamic change in the economy. Economy में आपको एक बहुत बड़ा change देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा. Second, they depict the positive and negative change in the economy. Economy में आपको बदलाव देखने को मिलेगा. Now, just now I will give you an example. These arise because of the several factors. Different factors are responsible for that change. And trade cycle has the various phases. In each phase does not last for the uniform period, and it has a time for the particular time, not for a long time. Just अभी का पीरियड जरा याद करो. अभी मैं दूसरा कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, गणपति का एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को. जस्ट गणपति का एग्जांपल दे रहा हूँ. एक छोटा सा त्योहार इकोनॉमी में कितना बड़ा ट्रेंड चेंज करता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. बराबर है. और सीजनल, इन दोनों को मिला के बोल रहा हूँ. Because of heavy rain, so now because of heavy rain, whatever the big fields are there, they are submerged under the water. So whatever the flower production is there, it is wiped out, खत्म हो गया. And due to that reason, market में flower की कमी है. It is my observation which I am sharing with you. Market में flower की कमी है. Second thing, due to the corona, okay, whatever the Ganpatis we brought for the worship our home, उसकी लगभग यूं समझो 75% तक कमी हो गई है. ड्यू टू दैट रीजन जो मूर्तियां फटाफट बिकती थी, उन लोगों का घर का पेट भरती थी, वो अभी कम हो गई हैं. मूर्ति कम होने की वजह से क्या हो रहा है? फ्लावर नहीं आने की वजह से क्या हो रहा है? उसकी सीधी असर उस किसान के एज वेल एज उस फ्लावर सेलर के दोनों के लाइफ पे पड़ रही है. Is it clear? तो क्या ये लॉन्ग टाइम चलेगी? नहीं, इट इज शॉर्ट टाइम. सो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, बराबर है, दैट इज द ट्रेड साइकिल. ये हमेशा आता है बच्चों.
एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. जीवन का अभिन्न अंग है. यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट. कोई भी उससे बच नहीं सकता है. डजंट मैटर वेदर इट इज द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन और द नेशन, व्हाटएवर इज देयर, कोई भी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है. ओके, सो हाउ दिस ट्रेड साइकिल इज वर्किंग, दैट आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. ओके, सो इनिशियल पीरियड इट इज अ बूम पीरियड. बूम इज कॉल्ड द तेजी. तेजी का टाइम रहता है, इकोनॉमी एकदम स्विंग में रहती है, लोगों की डिमांड जबरदस्त रहती है, मार्केट में सप्लाई अवेलेबिलिटी रहती है, इनकम लोगों की जनरेट हो रही होती है, बराबर, लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं. जैसे ही जो है ये अपने अपेक्स में पहुंचती है, इमीडिएटली रिसेशन. यहाँ पे देखो जितना ये खड़ा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा ये टूट टूट के ऐसे जा रहा है. मंदी आनी शुरू होती है, लोगों की डिमांड कम होती है, मार्केट में सप्लाई कम, भाव बढ़ जाते हैं. अभी आजकल देखो सब्जियों के क्या जबरदस्त भाव बढ़ रहे हैं. जो भिंडी परसों तक जो है 20 रुपए किलो बिक रही थी, आज वो भिंडी 30 रुपए की 500 ग्राम आधा किलो बिक रही है. वाई? बिकॉज ऑफ द रेट. तो ये जो है हमें एक महंगाई अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोगों की डिमांड जो है कम हो जाएगी, बराबर है. तो मंदी आनी शुरू होगी, लोग जल्दी से सामान खरीदेंगे नहीं, लोग अपने पैसों के बारे में, पॉकेट के बारे में, सेविंग के बारे में सोचेंगे, वो अपनी जल्दी से पैसा निकालेंगे. दैट पीरियड इज द रिसेशन, बराबर, मंदी. और मंदी के बाद में जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है, जोरदार तरीके से जो है एक ऐसा पीरियड आता है जब कोई खरीदी करने वाला रहता नहीं है, बराबर है. और उसके बाद में फिर स्लोली लोगों की जरूरत बढ़ती है, रिकवरी होती है, और फिर से जो है ये अपने ओरिजिनल फेज में बूम पीरियड में आती है. तो ये जो साइकिल नॉन स्टॉप चल रही है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड साइकिल. इसी को हम लोग जो है ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल बोलते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर डिमांड. आई ऑलवेज से दिल, ये इकोनॉमिक्स का दिल है, दिल, बराबर है. इसको आपको पढ़ना है और एंजॉय करना है, और आपको रिलेट करना है आपकी लाइफ के साथ में. क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, या आपने किसी ऐसे ट्रेंड को महसूस किया है? Okay, definitely you try to understand that thing. Okay, here we are completing this chapter. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद में अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, बाय.